Yes. Okay, let us start today's class. Am I audible? Yes, sir. Okay, thanks. Thanks. So in the last class, we were discussing that silicon, germanium, these are group 4 element, gallium arsenide is 3,4,3,5 semiconductor material, gallium being in group 3 and arsenic being in group 5. We also discussed that if you dope silicon, pure crystal of silicon by gallium, then it becomes p-type material, and if we dope it with arsenic group 5 element, pentavalent element, then it becomes an n-type material. What about gallium arsenide? So by adding gallium, we make a p-type. By adding arsenic, we make an n-type. Then what can we say about gallium arsenide semiconductor material? Is it a p-type material? Is it an n-type material? Is it a pure material? Okay. So your performance, you are determined that you will be not participating in the class. Thank you. Got it. So let us move then forward. So when we make a crystal or when we create a material such that valence band and conduction bands are created, then certainly by the geometry of this figure, you can understand that valence band has some peak and conduction band has some different peak separated by energy gap Eg. Because of quantum mechanical structure that prevails in construction of such material or bands, energy bands, these are not straight lines, these are in shape of hyperbole or inverted hyperbole. Okay, so there is a peak of valence band and there is a bottom of conduction band. This slide, it is a two-dimensional picture of that conduction band and valence band. It may happen that the bottom of conduction band exactly meets with the top of valence band.
Sorry. So since these material are three-dimensional array of atoms in form of a crystal, that three-dimensional is shown here in two dimensions. As I said you that it might happen that the top of valence band may coincide with the bottom of conduction band in energy configuration. So on y-axis always energy is shown, and on x-axis you may show anything, any other parameter. This is EK diagram. This diagram is called EK diagram, and on x-axis we are showing momentum. Momentum is h cross k. H cross is h upon 2 pi. H is Planck's constant. So momentum that we studied in classical mechanics as mass into velocity, in quantum mechanics it is h cross k, h upon 2 pi times k. K is Boltzmann. What is k? Boltzmann. Boltzmann constant. Then how can h cross k is momentum? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो k है ना मेरे दोस्त, उसको हम के बी लिखते हैं. बी, कैपिटल बी कमिंग इन सबस्क्रिप्ट. दैट बी रिप्रेजेंट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब in absence of that b, the k is, if it is one dimensional then it is wave number, if it is three dimensional then it is wave vector. Right now what we are discussing about the energy state of an electron, how those are arranged in a crystal. बैंड वहां से बन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं. The complete story started from that point, that in an isolated atom electrons do have very sharply defined energy lines or energy levels. But the moment we make a crystal out of all such atoms, now that atom is not isolated atom. That atom is actually residing in the ocean of other atoms. Therefore, its energy configuration would change. Therefore, the energy level of those electrons will change. That change occurs in form of energy band. Those bands are called valence band and conduction band. In group 4 case, the absolute zero temperature valence band is occupied completely by electrons, and there is no free electron in the conduction band. So group 4 element at absolute zero temperature behave as a perfect insulator, but it does not happen, it does not remain as insulator every time. At room temperature there are many free electrons available in the conduction band by virtue of absorption of energies by these electrons. They jump up to conduction band and therefore they are now free to move. Always remember the example of how you are taking your seat in the classrooms. When we talk about EK diagram or energy momentum diagram, that momentum you have to look sincerely. You have to match at least dimensionally that is momentum. This K is wave number. This K is 2 pi by lambda.
Wave number is related with wave length. wave particle duality में पढ़े होगे when in 11th or 12th standard physics. Electron may behave as a particle, may behave as a wave. When it behaves as a wave, I can write a wave equation to represent that electron. That wave equation does have k. E to the power I k dot r, where k and r are vectors, three-dimensional movement of electron. और अगर वन डायमेंशनल देख रहे हैं, only if we are considering that electron is moving in one particular direction x, then that periodic motion of electron is e to the power I kx, x in subscript, kx x. R becomes x and k vector becomes kx because it has three components kx, ky, kz. Wave number in along x direction, along y direction, along z direction. So this k is your wave number. H cross k is momentum, mass into velocity of classical mechanics of a classical particle. A classical particle's mv or p, what you write p is equal to mv. In quantum particle, it becomes h cross k. So there is an equivalence between these two. From here, you can draw what is the dimension of h, what is dimension of k, what is dimension of, knowing that m and v has the dimension of, mass has dimension m, L0, T0, and velocity has dimension m0, L, T minus 1. So here in this diagram, what we are showing is, since along y axis we are plotting energy, so this is the maximum of, this point is maximum energy of valence band. Till that point, electron resides in valence band. This is forbidden energy. No particle can exist, but energy is there. No particle can exist in this area. So now next particle will come here. How it can come here? There is no direct, it cannot go like this, it cannot go diagonally. So first it will absorb an energy equal to this energy gap, and then it acquires some momentum also. It requires momentum. Where does this momentum come from? मोमेंटम अगर याद करो, मैंने फोनोन मॉडल दिखाया था ना कि हाउ दीज एटम्स आर एक्चुअली पल्सेटिंग और वाइब्रेटिंग एट देयर नॉर्मल पोजीशन. उसमें स्प्रिंग एक्शन जो मैंने दिखाया था, दोज वेयर फोनोन एनर्जी कंसेप्ट. So by that vibrational motion within the crystal, these electrons, some of these electrons may acquire that momentum and many of them may not. Every study is probabilistic study. Therefore, in quantum mechanics, you cannot say anything with 100% guarantee. It is a probabilistic study. It may happen, it may not happen. Energy may go there, electron may go there, electron may not go there. The electrons which may acquire this momentum will come to the bottom of conduction band, or the first electron which will reach conduction band will come to the bottom of the conduction band. So you may say that what will happen if this electron, which is in the top of band, valence band, absorbs an energy more than Eg. So suppose Eg plus delta. So why can't it
come directly here. It will come there, but immediately it will release or it will lose energy equivalent to that delta and come to the bottom of conduction band as long as there is a vacancy there. Why? Because every system tries to stay at the minimum energy state. Every system tries to stay at minimum energy level state or minimum energy state. And therefore, that electron which came here a little bit more excited will release its additional energy and come down to bottom of conduction band as long as there is a vacancy. If there is no vacancy, then it won't come there. Then it will go where the next possible minimum vacancy of minimum energy there. It will go there. So in such cases where conduction band minima is not matching with valence band maxima, require momentum shift also. So on x-axis, this electron, an electron staying here, has more momentum than the electron which is available at the top of valence band. And energy also will have more energy than the valence band electron. The other possibility is that the minima of conduction band matching exactly in terms of momentum, matching exactly with the maxima of valence band. In such case, there will be no change in momentum. Electron just is required to absorb energy equal to Eg and it will come to conduction band. And now it can start conduction. Now energy electron may move freely there, and because of movement of electron, you can say that the current is flowing. Such type of material is called direct band gap material, in which minima of conduction band is matching exactly with maxima of valence band. Direct band gap material. On the other hand, this figure represents indirect band gap material, in which minima of conduction band does not match with maxima of valence band, and therefore you require to have a momentum change also for an electron to appear in conduction band. It is not just by taking or absorbing energy equal to Eg, the electron is available in conduction band. It cannot happen. Electron has to gain some momentum also. Since this requires an extra effort to make an electron to be available as free electron, which is a carrier in conduction band, since it requires an extra effort to make an electron of valence band to appear in conduction band as free electron or as a carrier, indirect band gap materials are not preferred. तो अगर तुमको सिलेक्ट करना है कि डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का स्विच बनाओ, तुम मान लो तुम कॉलकॉम में जॉब लेते हो, नॉट एज अ प्रोग्रामर बट एज अ सेमीकंडक्टर इंजीनियर, and you are given the task to pick a material which has better efficiency for switching. And beside other properties, first of all, you have to see if the material is a direct band gap material or an indirect band gap material, and you should prefer a direct band gap material
as long as, again, as long as that EG is suitable to your requirement. Now, what did I mean by that EG? Whenever you create a crystal, there are crystals of suppose silicon, there is germanium, there is gallium arsenide, there is gallium nitride, there is al gas, and there are hundreds of alloy material which are available to you in your basket of semiconductors. Each of them has different EG. For example, silicon has an EG of 1.14 electron volt. Germanium has a lower EG, 0.7 electron volt or 0.67 electron volt. 2 डिजिट में अगर जाओगे तो 0.67, सिंगल डिजिट पूछता हूं तो 0.7 electron volt could be a right answer. Gallium arsenide on the other hand has bigger EG, 1.42 electron volt. So germanium से even double से भी ज्यादा है. गैलियम नाइट्राइड उससे भी ज्यादा है, गैलियम आर्सेनाइड के डबल से भी ज्यादा है. गैलियम नाइट्राइड हैज EG इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसलिए गैलियम नाइट्राइड इज कंसीडर्ड टू बी यूज्ड इन व्हाट यू कॉल fast switching semiconductor material. LS, another alloy of 3,5 semiconductor material, has 2.16 electron volt EG. Now, why did I make a comment that it depends upon your requirement of the material which corresponds to EG? EG क्या सिग्निफाई करता है? मेरी भी उतनी ही गंदी आदत है कि मैं बिना क्वेश्चन पूछे मुझसे रहा नहीं जाता है. Energy corresponding to the band gap. नहीं, इतना बैकग्राउंड बनाने के बाद मैंने ये क्वेश्चन पूछा है. Certainly I am not looking for this answer. Do you think that I am looking for this answer, that EG corresponds to band gap energy of material? मैं अभी तुरंत कहा ना तुमसे कि EG, as long as that EG of material satisfies your requirement. So what could be your requirement and how that requirement could be related with EG, उस context में सोचोगे ना. So energy required for the material to be conducting. Any other answer? This is also not the right answer, or not good answer. Right or wrong तो पता नहीं. मैंने कहा as long as that EG satisfies your requirement. Selection of material की मैं बात कर रहा हूं. उसके पहले मैंने आपसे ये बताया कि since it requires an additional effort to add momentum also to the electron while it is liberated from valence band and going to conduction band, and therefore indirect band gap materials are not preferred. But कई बार हम indirect band gap material यूज करते हैं. सिलिकॉन इज एन इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, और सिलिकॉन पे तो पूरी कहानी चल रही है. For last 5 decades or maybe more than that.
So it means this is not the criteria for selection of material. Acha. So let us see this problem different form. In different form. मैं जो कह रहा हूं कि एक क्रिस्टल है, सो मान लीजिए आपके हाथ में सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है. तो how you are adding energy to this electron? How do you know that energy is being added to electron? क्या करते हो क्रिस्टल को? Heat the crystal. हाँ? Heat the crystal. Heating the crystal. उसमें क्या हो रहा है? Is there any other way? क्योंकि certainly अगर मैं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में यूज हो रहा है, राइट और रॉन्ग? यस और नो? Yes. यस. कितनी बार तुमने उसको किसी बर्नर या किसी फ्लेम पे रखा है, स्टोव के फ्लेम पे, यार मुझको फोन करना है, चलो इसको गैस लाइट करो और उस पर फोन रखूंगा, फिर मैं फोन करूंगा. कितनी बार किया तुमने? Electronics use current. Electricity. हाँ, सॉरी, Electricity. क्या इलेक्ट्रिसिटी? Some Can apply potential Applying potential, yes. वो कैसे तुम ऐड कर रहे हो पोटेंशियल? using battery. यूजिंग बैटरी. बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर दैट सेमीकंडक्टर स्विच और मटेरियल और डिवाइस जिसको हम दे रहे हैं. तो जो ही उसका सर्किट हमने पूरा किया, उसको एक पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव हुआ, एक साइड नेगेटिव हुआ, and it acquires some energy. If that energy is sufficient enough for electron to jump to the conduction band, it would jump with certain non-zero probability. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वहां बहुत हैं बैलेंस बैंड में, बट सारे के सारे एक ही साथ नहीं जंप कर जाएंगे. स्टिल देर आर सम लेजी. मेरे क्लास में तो 290 या 330 स्टूडेंट हैं, बट सारे के सारे क्लास में आते नहीं है. जो आते हैं वो भी सोए रहते हैं. So complete, it is a correspondence. This class is complete example of a quantum system. एनर्जी एक्वायर या नॉलेज एक्वायर कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी सब सोच रहे हैं कि चलो यार मेटल पे कर लेंगे, देख लेंगे. जब चलना होगा, जब हमको कंडक्शन बैंड में जाना ही पड़ेगा तो देख लेंगे, उस दिन जाएंगे. Why to bother? Why to make an extra effort? इसको जाना है जाने दो, हम यहीं पे अच्छे हैं. So similarly, we are adding by one of several means, we are adding energy. and तो जब भी हम किसी स्विचिंग एक्शन की बात करते हैं या जब भी हम किसी डिवाइस बनाने की बात करते हैं, तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन मॉडल फॉर्म, व्हाट वी आर स्टडिंग इन मॉडल फॉर्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन मटेरियल एंड सिग्नल. एनर्जी की बात कर रहे हो ना, बैटरी हमने ऐड किया, कनेक्ट किया, तो हम कोई सिग्नल, या तुम अभी जिसने कहा कि हम हीट करते हैं, या मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि हम लाइट शाइन करते हैं, लेजर के थ्रू भी हम स्विचिंग करते हैं. व्हाट इज लेजर? ऑप्टिकल रेंज का अगर है तब बिल्कुल तुम उसको लाइट के फॉर्म में देख सकते हो. दैट कुड बी इन IR और UV रेंज आल्सो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो लाइट शाइन करने से भी मैं एनर्जी दे रहा हूँ उस इलेक्ट्रॉन को.
So basically, what I am doing is that I am making a photon of h nu energy fall on the material, and that photon now will see that material as one of the three type. या तो वो ट्रांसपेरेंट उसको दिखेगा, जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पे तुम लाइट पास कराते हो तो सारा का सारा लाइट दूसरे एंड चला जाता है, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। पानी पे करोगे तो सारा का सारा नहीं जाएगा, बट काफी कुछ दूसरे एंड पे आपको दूसरे साइड में मिलेगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा, जैसे भी है। So it depends upon the property of the material, how this signal sees it, either as transparent or semi-transparent or opaque. वुड पे डालोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं दूसरे एंड पे दिखेगा। नहीं दिखेगा, नहीं दिखने का क्या रीजन है? क्योंकि वो सारा का सारा लाइट वहां पे कंज्यूम हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लास में एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्लास में ट्रांसमिटिविटी है, ट्रांसमिटिविटी इज मोर देन 0.9। तो ये सिग्नल और मटेरियल ये इंटरेक्ट करते हैं, का इंटरेक्शन ही हम स्टडी करते हैं। So let us focus on the part of the energy that is absorbed. तो पार्ट ऑफ द एनर्जी मतलब कितने फोटोन वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मान लो 1 मिलियन फोटोन हमने इंसिडेंट किया, उसमें से 10,000 फोटोन वो कंज्यूम कर गया, एब्जॉर्ब किया, एंड रिमेनिंग 1 मिलियन यानी 10 लाख, उसमें 10,000 चला गया। सो 9,90,000 फोटोन बाहर आ गए। So it has some transmittivity, it has some absorptivity, दोनों मिला के एनर्जी कंजर्वेशन तो होना ही होना है। Now those absorbed 10,000 photons, वो एनर्जी कहाँ गई? तो 10,000 h nu energy of the light particle or light that you have used of frequency nu actually absorbed by those electrons. Okay, एनर्जी वही एनर्जी कोई अब्जॉर्ब करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं। That energy is going to be absorbed, which is allowed, so which is equivalent to Eg, or maybe Eg greater than or equal to Eg. So h nu greater than or equal to Eg is going to be absorbed, not less than that. तो अगर Eg से लेस एनर्जी के फोटोन तुम इंसिडेंट करा रहे हो किसी मटेरियल पे, तो दैट सिग्नल विल सी थ्रू द मटेरियल, ट्रांसपेरेंट देखेगा, वो बाहर सबका सब बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर लुक एट देम, क्योंकि अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि चलो ये एब्जॉर्ब करके यहाँ आ जाते हैं, अगला आएगा तो वो एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में। तो इन 2 hops it is not allowed, and therefore we call it quantum. क्वांटा में ही ये काम करेगा, फ्रैक्शन ऑफ क्वांटा में नहीं काम करेगा। So the semiconductor material that we are considering, or that as a semiconductor engineer looking into, is what is the use? You can use it as a detector, or you can use it as an emitter. तो जैसे अभी मैंने 3 मटेरियल का तरीका बताया कि इधर इट विल सी इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल, और ट्रांसलूसेंट or semi-transparent material. Similarly, a material can
तो ये तो एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही मटेरियल इस वेवलेंथ को एमिट करता है, तो एमिट करने में भी रिवर्सल प्रोसेस भी वही है। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा आने की कोशिश करेगा, बिकॉज अगेन द सेम fundamental law of nature that every system would try to reside in minimum possible energy state. So by adding some energy, you actually made one electron to go to an excited state, but that electron always remembers that what is its place, where it has come from, and it will always try to go back to that place. Because it has to acquire, it will always try consistently to go back to its minimum possible energy state. उसको हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फिर से वहां से यहाँ पे एक होल बन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में गया तो वन होल इज क्रिएटेड हियर। दैट इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिकम्बाइन विद द होल which it left in वैलेंस बैंड। तो आने की कोशिश करेगा। तो आने की कोशिश करने का क्या मतलब है? हाउ इट विल कम? विल कम बाय रिलीजिंग सम एनर्जी, सर्टेनली, बिकॉज एनर्जी एक्सिस में वो नीचे आ रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तभी तो नीचे आ पाएगा। हाउ दैट एनर्जी इज रिलीज्ड? एनीबॉडी? Let us consider for the time being that conduction band electron can also come back to valence band. As a valence band electron can go to conduction band by absorbing some energy equivalent to Eg. Similarly, a conduction band electron will jump or come back to a valence band, become a valence band electron by releasing some energy equal to Eg. वो कैसे रिलीज करेगा? एनर्जी शॉर्ट करने में तो हमने बताया कि हम उसको गर्म कर रहे हैं। हाँ, in सॉरी। form of radiation. So what type of radiation? Sir, it depends on how much energy it released. Like we can calculate like energy is equal to h mu. So we will get the frequency for that, and depending on the frequency band, considering that different light waves that can release. So do you mean to say that all radiations are in optical radiation? In each case, you will get some wavelength. Yes, sir, because the energy, yeah, you will get some wavelength. Always. Yeah, as far as I know. अच्छा, जब तुम, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से रिलेट करो। जब तुम बहुत देर तक अपने फोन को यूज करते हो, तो डू यू फील सम हीट गेटिंग, so do you feel that your phone is heated? Yes, sir. या तो कान के पास गर्मी लगती होगी, या अगर तुम हेडफोन यूज कर रहे हो या ईयरबड यूज कर रहे हो, फिर भी फोन तो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है वो फोन? Sir, because it is releasing some energies. So Because? we feel some heat. It releases some energies. नहीं, बट हीट कहाँ से आ रहा है? अगर तुम कह रहे हो कि वो जो रेडिएट कर रहा है वो तो लाइट रेडिएट कर रहा है। हीट इज नॉट लाइट, लाइट इज नॉट हीट। तब तो उससे लाइट दिखना चाहिए ना। अगर बहुत देर यूज कर रहे हो तो तुमको तो टॉर्च के जैसा ग्लो करना चाहिए तुम्हारा मोबाइल। Sir, but some light are like that we cannot see them, but that can be filled. Like if the phone is hitting, then that can be feel. felt Yeah, that can हीट be का felt. पास्ट फेल्ट होगा। हाँ, that Yes. can be felt। नहीं,
एक कोई और लड़का जवाब दे रहा था, बताओ। Sir, the सर हीट रेडिएशन भी हो सकता है। हीट रेडिएशन भी हो सकता है। somebody else was trying to say something. sir, if the energy is corresponding to some particular frequency, then it can release photons. Otherwise, it can also release heat energy. It can the released energy will be converted to heat energy. It can go either way. So let us sum it up. So emission, absorption केवल एक ही तरीके से हो सकता है, that is absolute absorption, and which cannot happen in fraction of Eg, but absorption is absorption. But emission, as you are also trying to say, emission takes place in two forms. One is radiative emission, we call it radiative emission, जिसमें मुझको रेडिएशन मिलता है, लाइट मिलेगा। लाइट जरूरी नहीं है कि सब विजिबल स्पेक्ट्रम में ही मिले, नॉन विजिबल में IR में भी मिलेगा, UV में भी मिलेगा, बट लाइट मिलेगा। रेडिएटिव एमिशन, रेडिएशन मिलेगा मुझको। Another type of emission could be non-radiative, which may happen in terms of heat, sound. जब तुम अपने फुटबॉल को अपने कमरे में किक करो बहुत जोर से, किक करने का मतलब है कि यू आर एडिंग पोटेंशियल एनर्जी टू द फुटबॉल, जिसके कारण वो इट टेक्स ऑफ और जाके सामने की दीवार से टकराता है वो बॉल, तो क्या होता है? एक तो रिबाइंड हो रहा है, वापस तुम्हारी तरफ आएगा। तो वन डायरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग changed to another direction potential energy, but while doing so, when it hits the wall, while changing the direction of motion, वहां पे बहुत तेज आवाज होती है ना, वो आवाज क्या है? That आवाज is actually a form of energy which is getting released. इसलिए तुम जितने जोर से उसको पैर से मारते हो, किक करते हो, उतने जोर से वो वापस नहीं आता है, उससे लाइटर, उससे स्लोअर स्पीड से आएगा। Because some energy is released or lost in form of sound energy there. Sound is also a form of energy. Heat is also a form of energy. Okay, so all emissions are not radiative emission. There could be radiative, there could be non-radiative. We are looking for semiconductor materials mostly for radiative emission, जिससे हम लेजर बना रहे हैं, जिससे हम LED बना रहे हैं. These are actually semiconductor material. और जिससे मैं फोटो डिटेक्टर बना रहा हूं, those are using the process of absorption. मुझको पता चल रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी के एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है. It means it has this Eg और corresponding to this Eg मुझको मालूम है ये Eg है, तो मुझको मालूम है कि सिलिकॉन इज 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसको जब मैं जूल के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, देन आई सी कि फॉर लोकेटिंग और डिटेक्टिंग दिस टाइप, मान लो किसी हजार्डस प्लेस पे, किसी माइन में आपको पता चला कि इस वेवलेंथ का या इस फ्रीक्वेंसी का पॉइजनस गैस यहाँ पे मिलता है, तो कैसे डिटेक्ट करोगे उसको? अगर वो पॉइजनस गैस है, सर्टेनली इफ यू गो पर्सनली देयर एंड टू डिटेक्ट दैट गैस, you will either collapse or you will die. उसके बदले हम किसी रोबोट को भेजेंगे या उसके बदले हम किसी ऐसे डिवाइस को वहां पे डिप्लॉय करेंगे, दैट डिवाइस विल गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट गैस व्हिच इज कॉल्ड गैस डिटेक्टर. उस गैस डिटेक्टर में मैं कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करूंगा? सेमीकंडक्टर मटेरियल that responds to that particular frequency or wavelength.
स्निफर डॉग जो हम एयरपोर्ट पे यूज करते हैं, देखते हैं, बट स्निफर डॉग्स आर यूज्ड इन मेनी अदर प्लेसेस। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ रहता है। तो वो हम यूज करते हैं बिकॉज दैट डॉग इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर स्मेल। अब स्मेल क्या है? स्मेल इज द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ दैट इज कमिंग आउट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। Since that is not poisonous, therefore we use live animal. That cannot be said or termed as atrocity against animal. और इसलिए अगर कहीं बॉम्ब है, अगर कहीं नारकोटिक्स का स्मगलिंग हो रहा है, तो उस तरह के सेंसिटिव चीज को ह्यूमन बीइंग कैनॉट स्निफ दैट। सिक्योरिटी वाला जो एयरपोर्ट पे डिप्यूटेड है, वो नहीं बता सकता है कि आपके बैग में बॉम्ब है या नहीं है, या आपके बैग में ग्रीन ग्रास है, ग्रीन ग्रास नहीं क्या होता है, ब्राउन ग्रास नहीं, पता नहीं क्या होता है, तुम ही लोगों को ज्यादा पता होगा। तो वीड है या नहीं है। सिक्योरिटी पर्सन कैनॉट स्निफ दैट, बट अ डॉग कैन। सो उस तरीके के डिटेक्शन के लिए जो डिटेक्टर हम बनाते हैं, या उस तरीके के एमिशन के लिए जो एमिटर हम बनाते हैं, जो एलईडी या लेजर डायोड हम बनाते हैं, दोज आर फॉर्म यूजिंग दो सेमीकंडक्टर्स। Therefore I said that as long as it satisfies your requirement। अब आपकी कंपनी ने आपको कहा है कि आपको इस वेवलेंथ का बनाना है लेजर, तो फिर उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर ईजी किसी इनडायरेक्ट मटेरियल का है, तो यू आर फोर्स्ड टू टेक दैट इनडायरेक्ट मटेरियल। However, its efficiency is low। So try to understand that। And if I say you that EG is this, then what type of detector, which wavelength you can detect, or which wavelength laser you can emit from this material, learn how to calculate that। भी एक लड़के ने बहुत अच्छे से बताया। तो वो कैलकुलेट करना देख लीजिएगा। लैम्डा अगर मैं पूछता हूं तो लैम्डा ईजी के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? तो लैम्डा और ईजी में क्या रिलेशन होगा, दैट यू शुड बी नोइंग। ओके, सो ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। सो दिस इज द लेफ्ट इमेज इज फॉर डायरेक्ट बैंड गैप, जिसमें एग्जैक्टली मीट कर रहा है, के जीरो है दोनों का, डिफरेंस ऑफ के डेल्टा के, और इसमें के इज सब्सटेंशियल। इस पार्टिकल का के यहाँ पे है और इस पार्टिकल का के यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ ये कैसे जाएगा, या यहाँ से यहाँ ये कैसे आएगा? तो कैसे आएगा वो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। So from this point to this point, where it is losing momentum also and some energy also, ये वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर से हो रहा है क्रिस्टल के अंदर। तो क्रिस्टल में वो कुछ हीट होगा और वो इलेक्ट्रॉन वहां से मोमेंटम अपना रिड्यूस करके आ रहा है यहाँ पे, एंड फ्रॉम हियर इट विल सी इट एज अ डायरेक्ट फॉल। Every time recombination takes place for the same momentum particle, delta k is equal to 0 के लिए ही recombination होगा। So first that particle will try to minimize or maximize its k so that it should match with the target k, and then it will recombine by free falling to that point. So this is the process, and therefore this is called indirect band gap, and therefore its probability is lower than the direct band gap recombination probability। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को ये नहीं सोचना है कि यार मैं अपना मोमेंटम कैसे कम करूं, वो अप्रोप्रिएट मोमेंट का नहीं वेट करेगा जिस समय वो क्रिस्टल के
किसी वॉल को हिट करके अपनी एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ लेसर मोमेंटम। So direct band gap material has greater efficiency in comparison to indirect band gap material, but both band gap material exist and both has relevance. Both have relevance. Both are required. Both are desired. Both are used. On this slide, I have shown same process. I have shown in a different or slightly complicated way. This complicated way is basically the three-dimensional array of crystal formation. तो सबसे पहले जब हमने बैंड गैप देखा उसमें हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किया। उसके बाद जो पिछले स्लाइड तक हमने देखा उसमें हमने बताया कि देयर इज अ कर्व्ड स्पेस फॉर दीज एनर्जी बैंड्स। बैलेंस बैंड में वो लोअर से मैक्सिमा तक जाता है, कंडक्शन बैंड में वो उसका उल्टा है। बैलेंस बैंड में चूंकि होल हैं, therefore holes are completely opposite to conduction band। और अभी मैं फिर वापस आऊंगा, मास का डिस्कशन हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। व्हाट वुड बी द मास ऑफ होल? तो कह रहे हैं कि मास नहीं होगा, दे आर रॉन्ग। एंड द आयरनी इज, द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज दैट फॉर लास्ट 4 weeks none of you have tried to study, none of you have volunteered to tell the class or tell me कि साहब मैंने मास के बारे में पढ़ा है, and can I say you what is the effective mass of a hole? None of you have said. It pains me, but ठीक है, क्या करें। सड़क पे मैं जब किसी ब्लाइंड पर्सन को देखता हूँ या किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को देखता हूँ, it pains me, but I can't help it. Similarly, I can't help my class also to behave. Anyway, so this is the same situation. The left diagram is for direct band gap material. The right diagram is for indirect band gap material that you can see. But what are the other minima? There are other minima also you are seeing. One is here, one is here. Direct band gap I am saying just in respect to valence band में कोई दिक्कत नहीं है। Valence band में there is a single peak. But conduction band में I am seeing that there are many hillocks. There are several peaks, there are several troughs. So there are several minima. This diagram becomes important in terms of time। क्या हो गया? 11:10। 11:10। तो कितना देर का क्लास अभी है बचा हुआ? 20 मिनट। यस सर। ये क्लास 10 to 11:15 है या 10:15 to 11:30 है? 10:15 to 11:30 है। हाँ, तो 20 मिनट। Okay. So now this slide becomes very important in terms of engineered materials. How we are going to engineer, that is, that this slide will tell us about that. So what these numbers 111, 100, had this course been of semiconductor material, we would have seen that what do these numbers mean. But अभी छोड़ दो, अभी उससे कोई उसकी जरूरत नहीं है इस कोर्स के लिए। So please ignore these numbers. Just focus on this graphical representation of valence band and conduction band. You are seeing that it is
written gallium arsenide here, and here it is written silicon. So this is gallium arsenide's energy diagram, and this is silicon's energy diagram corresponding to its conduction band and valence band. And as I told you that silicon is an indirect band gap material, gallium arsenide is a direct band gap material. Still, last 6 decades we have spent, or today also we are using silicon as a very, very promising semiconductor material. So this confirms that it is not direct or indirect band gap property that is the most important property for selection of material for any action. It is one of that. But yes, जहां पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है, वहां certainly you have to select direct band gap material because its efficiency is higher than band gap material that we learned in last 20 minutes. Now this picture is actually the same, but in slightly better form, slightly better. इसमें जो आपको ये 3 मिनिमा दिख रहे हैं, एक यहाँ पे है मिनिमा, एक यहाँ पे है मिनिमा, और एक यहाँ पे है मिनिमा. All those 3 minima are here also, and those are now labeled. Labeling हमने किया हुआ है. इसका नाम हम रख रहे हैं X वैली, इसका नाम है गामा वैली, इसका नाम है L वैली. ओके, और ये डायरेक्ट बैंड गैप है. सो दिस इज गैलियम आर्सेनाइड. ये डायरेक्ट बैंड गैप का सिचुएशन है जिसमें वैलेंस बैंड का टॉप is matching with gamma valley minima of conduction band. Gamma valley minima of conduction band. And therefore, this material is used as a direct band gap material, and Eg is equivalent to this difference, and it is 1.42 electron volt, which is we call the Eg of gallium arsenide. This is gallium arsenide. Okay. Now let us consider for the time being, not gallium arsenide, let us consider an alloy called Al gas, in which ये भी हमने आपको बताया हुआ था कि I can replace some of the gallium atom with equal number of aluminium atom. Aluminium और gallium दोनों ग्रुप 3 एलिमेंट है, इसलिए मैं बहुत आराम से उसको चेंज कर सकता हूं. There will be no change in the electronic configuration. The only change would be in terms of A. A is the length of unit cell, क्योंकि एल्युमिनियम का अब एटॉमिक साइज डिफरेंट है, गैलियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक साइज डिफरेंट है. इसलिए अगर मैं गैलियम निकाल के एल्युमिनियम रखता हूं तो वो क्रिस्टल के यूनिट सेल के डिमेंशन को चेंज करेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं चेंज करेगा, बिकॉज एल्युमिनियम इज ऑल्सो ट्राईवैलेंट एंड गैलियम इज ऑल्सो ट्राईवैलेंट. तो दोनों के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ेगा. ओके, so now consider an alloy in this form, in which aluminium and gallium in molar percentage, those are shown as x and 1 minus x, क्योंकि दोनों को मिला के 1 होना है, which is equal to s number of atom और number density, क्योंकि हमने कहा है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड स्ट्रक्चर है, और डायमंड स्ट्रक्चर में 4 एटम रहेंगे गैलियम के और 4 एटम रहेंगे आर्सेनिक के, मेकिंग इट 8 एटम पर यूनिट सेल. एंड देयरफॉर x अगर ये है तो 1 माइनस एक्स, ये अगर 0.1 है तो ये 0.9 है, ये अगर 0.13 है तो ये 0.87 है.
ये अगर 0.45 है, ये 0.55 है, ये 0.67 है, ये 0.33 है। इस तरीके से वो चेंज होते रहेंगे आपस में। दैट टेक यू हैव टू टेक केयर। So this LS will become gas for x is equal to 0. Clear? And this L gas will become LS for x is equal to 1. क्योंकि x अगर 1 है तो ये L पूरा का पूरा L है और गैस का GA 1 minus 1 0 हो गया। तो molar percentage of GA in LGA is 0. So there is no Ga atom in that crystal. All atoms are of aluminium and therefore it becomes LS crystal. On the other hand, if x is equal to 0, there is no, it means there is no aluminium atom in the crystal and this crystal is actually gas, Ga, gallium arsenide. So by changing this x in that fraction from 0 to 1, what I am doing exactly is I am changing the crystal from gas to LS. अब उससे फर्क क्या पड़ रहा है? उससे फर्क ये पड़ रहा है, the moment I start shifting this x or manipulating this x or engineering this x, these values in conduction band start shifting. क्योंकि एटम का साइज अलग है एल्युमिनियम और गैलियम का। एटम का साइज डिफरेंट है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स तो हैं वो, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन से ही रिप्लेस कर रहा हूं। बट नाउ दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, सिंस दे आर लोकेटेड differently in the 3-dimensional space of this crystal, they influence their neighbors differently. And so the overall energy configuration of the crystal is now changing. Meaning what? Meaning that the conduction band will change in comparison to valence band. In comparison to valence band. चेंज करने का मतलब क्या है? ये तीनों थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू करेंगे। But what is found is that the rate of shift or change of these values is different from each of these values. Meaning what? Meaning this. When x is equal, इस एक्सिस पे मैंने x प्लॉट किया है, इस एक्सिस पे मैंने, ये एक्सिस हमेशा एनर्जी रहेगा, तो इस पे Eg प्लॉट किया है। ओके, x का मतलब है कि कितना फ्रैक्शन एल्युमिनियम प्रेजेंट है। एल गैस की बात हम कर रहे हैं। x कितना, 0 का मतलब है कि 0 एल्युमिनियम है, 1 का मतलब है 100% एल्युमिनियम है। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल और प्रोपोर्शनल, पोलर प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। x रिप्रेजेंट्स एल्युमिनियम इन मोलर परसेंटेज और फ्रैक्शन, 0 से 1 x एक्सिस। जैसे जैसे एल्युमिनियम में बढ़ाता जा रहा हूं, now you can see this blue line is the minima line. Earlier that is gamma valley, ये गामा वैली मिनिमा पे है, उसके बाद L है, उसके बाद X है। ये गामा की लाइन है, ये L की लाइन है, ये X की लाइन है, क्योंकि X की एनर्जी सबसे ऊपर है। मिनिमा की बात कर रहे हैं, वैली की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ गामा वैली is much more steeper than the other two. L अपना linearly vary कर रहा है, X का rate of change is lowest of all these three. So X, though it is also moving up, but it is moving up with the lowest rate. So almost horizontal, flat के जैसा कर रहा है।
तो ये ऐसे 1 पॉइंट मान लो 1.85 से 1.85 से ये हार्डली 1.87 तक पहुंचा यहाँ पे। in that same time with change, not time, for the same change in x, gamma value moved from 1.4 to 1.87, जितने में ये 1.85 से 1.87 में पहुंचा और यहाँ पे क्रॉस हो। सो दिस इज x इक्वल टू 38%, 0.38। ओके, यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो मेरे ख्याल से ये 0.38 है। सो एट द वैल्यू 0.38 or till the value x is equal to 0.38, this material remains direct band gap material. And what is this material here? It is Al 0.35 Ga 0.65 S, यहाँ पे वो मटेरियल है डायरेक्ट बैंड गैप। 0.38 पे दोनों मैच कर गए, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट बैंड गैप अभी भी है L 0.38 Ga 0.62 S, but the moment it changes over, तो 4 पे क्या हो गया, L 0.4 Ga 0.6 S, it became indirect band gap। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये जो x वैल्यू है वो तो हमेशा यहाँ पे ही है। It is not changing in momentum space, it is changing in energy space। तो वैलेंस बैंड अगर यहाँ है तो नाउ दिस x is minima, but this material is now indirect band gap। So gallium arsenide, though gallium arsenide was a direct band gap material, Ls is an indirect band gap material with बैंड गैप। अब बैंड गैप देख रहे हो, यहाँ पे 1.43 है, बट यहाँ पे ये ज्यादा हो गया है कि वो x चेंज होते होते यहीं तक पहुंच पाया। तो दिस LsEg is not 1.43, is 2.16 electron volt, and this is what do we mean by engineering in materials terms of change in Eg। अब जिस तरीके का Eg आपको चाहिए, आपको अगर कंपनी ने कहा कि साहब we require a laser diode corresponding to Eg 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप कहोगे कि ठीक है साहब हम बना देंगे, वो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो दिस इज 2.1, सो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे होगा, विच इज इक्विवेलेंट 0.9x। तो L 0.9 Ga 0.1 S, ये मटेरियल हमको फैब्रिकेट करना है एंड वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग लेजर फ्रॉम दैट। दैट्स इट। So from gas, which was giving you a laser of equivalent to 1.43 electron volt, now you will get a lesser wavelength laser corresponding to 2 electron volt or 2.1 electron volt by Ls or L 0.9 Ga 0.1 S। Okay, so this is very important concept that you need to understand carefully। मैं यहाँ पे किताब का नाम भी लिख दिया हूँ, दिस बुक इज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म, आप उसको लीजिए, अच्छे से पढ़िए। Unless you understand this, you are going to miss the beauty of semiconductor material। The same thing जो अभी इतना मैंने बोला है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। दिस इज एक्जैक्टली द scanned image of 3.6 of स्टीटमैन बैनर्जी बुक। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसी चीज को
अपने लैंग्वेज में आपको पिछले 10 मिनट में 15 मिनट में समझाया है. द अदर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन हियर. अभी हमने गैलियम को चेंज करके दिखाया कि वो क्या चेंज कर रहा है. अब उसका 3,5 में ग्रुप 5 एलिमेंट को चेंज करके, यहाँ अलग एग्जाम्पल है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस में चेंज किया गया है मोलर प्रोपोर्शन. Instead of X in group 3, now X is used in group 5 element. S 1.x 1 minus x P x. और सिमिलरली बताया गया है कि ये चेंज ओवर 0.55 पे होगा, जहां पे वो डायरेक्ट बैंड गैप से इनडायरेक्ट बैंड गैप बनेगा, और एनर्जी गैप Eg आपका करस्पॉन्डिंगली विल मूव अप. ओके. जो भी हैं अपनी माँ को या तो चुप कराइए या अपने को म्यूट कीजिए. ओके. So this question you have to answer. I am not going to spend time on this, but what will happen if we add silicon or germanium to a crystal gallium arsenide? अभी तक तो हमने देखा कि अगर हम ट्राईवेलेंट यूज करते हैं तो वो पी टाइप बनाया, पेंटावेलेंट यूज करते हैं तो वो एन टाइप बना रहा है. बट अगर सेम ग्रुप 4 एलिमेंट यूज करते हैं इन गैलियम आर्सेनाइड तो वो क्या बनाएगा? Is anybody ready to take this question? ग्रुप 4 के केस में बहुत सिंपल था कि अगर मैंने लेसर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल को ऐड किया, यानी इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, सो इट इज पी टाइप, पोल आ रहा है वहां पे. अगर मोर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को यानी पेंटावेलेंट को ऐड किया तो वी आर गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस एंड देयरफॉर इट इज निगेटिव टाइप, एन टाइप मटेरियल. बट अब मैं वो नहीं कर रहा हूं, अब मैं सेम मटेरियल यूज कर रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? या तो एन टाइप बोलना चाहिए या पी टाइप बोलना चाहिए. व्हाट विल इट विल बिकम? दिस इज द Sir, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड. इसमें जो है वो सिलिकॉन है, राइट साइड जो है वो गैलियम आर्सेनाइड है. ओके. ओके. अब हम आते हैं, करनी थी मास के बारे में. होल का क्या मास होगा? होल के मास के लिए आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड स्लाइड बिकॉज आई वांटेड यू टू फोकस ऑन दिस एंड स्टडी योरसेल्फ. तो उसके लिए आपको यूज जो करना पड़ेगा, सिंस दीज आर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल और क्वांटम लेवल डिस्कशन, so you have to take energy. एनर्जी यूजुअली क्लासिकल मैकेनिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज p स्क्वायर बाय 2m, वेयर p is mv. So m square v square upon 2m is half mv square, which is energy. Quantum conversion of this p square upon 2m is h cross k whole square upon 2m, because momentum is h cross k. K is wave number if we are considering one dimensional motion of the particle. So energy is equal to h cross k square upon 2m, or h cross square k square upon 2m. E is equal to h cross square k square upon 2m. H cross is constant, m is constant, 2 is digit constant. Only variable is k, wave number corresponding to different electron, wave number will change, or corresponding to different material, wave number will change. And therefore energy will change. So energy on left hand side and k on right hand side are variables. तो अगर हम इसको फंक्शन के फॉर्म में देखें कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ के
and let us try to differentiate energy with respect to k, then the first differential can be written as dE by dk. फर्स्ट डिफरेंशियल तो k स्क्वायर 2k हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ऊपर का जो 2 है वो नीचे के 2m वाले 2 को कैंसिल करेगा, सो यू कैन राइट dE by dk इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर k by m. डिफरेंशिएट इट वंस अगेन, मुझको मास निकालना है, ये जो m है ये मास ऑफ द पार्टिकल है regardless of whether it is free electron or hole. Our objective is to understand what is the mass of hole. उसका एक ही तरीका है कि मैं इस एनर्जी इक्वेशन से निकालूंगा, क्योंकि the only thing I know about those hole and free electrons is what is their energy state, how much energy do they have. इस एनर्जी इक्वेशन से मैं मास को देखना चाह रहा हूं. तो फर्स्ट डिफरेंशियल विल गिव मी h क्रॉस स्क्वायर k by m. फिर से उसको डिफरेंशिएट करो, d2e by dk स्क्वायर. सिंगल वेरिएबल फंक्शन में मान के चल रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूं. Therefore I am writing it d2e by dk square. Otherwise I should have written is del 2e by del k square, partial derivative. तो d2e by dk square अब क्या होगा, k इस k, उसको k के साथ में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वो कांस्टेंट 1 दे देगा मुझे. तो राइट हैंड साइड में आई कैन राइट h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m. So d2e by dk square is equal to h cross square upon m. This equation I find. So now I can connect mass with the differential, second differential of energy with respect to k. E और k का डायग्राम मुझको पता है, for each electron I know that. So I can write mass as 1 over m. अब मुझको होल के लिए लेना है या मुझको इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लेना है तो 1 अपॉन एम ई स्टार. स्टार में लगा रहा हूं रिलेटिव मास, इफेक्टिव मास के लिए, बिकॉज दीज आर नॉट आइसोलेटेड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इन द सी ऑफ ऑल अदर एटम्स, ह्यूज नंबर ऑफ एटॉमिक डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, इसलिए मैं इफेक्टिव मास लिख रहा हूं. दैट मास इज नॉट एब्सोल्यूट मास of electron. So 1 over mn star नेगेटिव के लिए और 1 over mp स्टार पॉजिटिव के लिए, होल के लिए, या 1 over mh स्टार फॉर होल इज इक्वल टू 1 over h क्रॉस स्क्वायर एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ e विथ रेस्पेक्ट टू k. So d2e by dk स्क्वायर. सिंपल. और इसलिए अगर आप देखिए d2e by dk स्क्वायर विल गिव यू कि वो स्लोप क्या हो रहा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है. और इसलिए वैलेंस बैंड में आपको मैक्सिमा दिखता है, कंडक्शन बैंड में आपको मिनिमा दिखता है. एंड देयरफॉर the mass of hole may be considered as negative of that of electron, but not exactly negative. जब आप उसको देखेंगे तो actually those holes are residing in actual core atom presence. तो उनका जो पुल है, they are experiencing more pull from that core atom. तो उनको उस कोर एटम के प्रेजेंस में मूव करने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, यानी उन लोग ज्यादा फोर्स से वो खींच रहा है. उसको ज्यादा रेसिस्टेंस दिख रहा है, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उतने ही दूर मूव करने के लिए. हाउएवर द फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रीली इन द कंडक्शन बैंड. इट मींस द मास ऑफ होल इज स्लाइटली हायर. ज्यादा मास होगा तभी तो आपको मूव करने में दिक्कत होगी ना. एक मोटा आदमी मुश्किल से मूव कर पाता है, एक दुबला पतला आदमी उससे तेजी से भागता है.
So combining these two, one from the slope of conduction band and valence band, Q negative होगा, और दूसरा because holes are actually seeing the presence of core atom and therefore they find it very difficult to move in that lattice. Effectively, the mass of hole is slightly more and negative in comparison to the mass of free electron conduction band. Okay, so now I am stop record. As I said you, I am not going to give you my recorded video. So I will not. I will keep it for my record. So thank you very much. You may leave.